Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Tapasya. In this video, I'm going to be sharing 17 things that I learned at 17. Well, if you're new to the channel and watching my video for the first time, please do consider subscribing and let's just get started with the video. Number 1 is that people leave without closure and trust me, you don't need it. मुझे ये समझने में काफ़ी टाइम लग गया था. People leaving you without actually explaining their actions is enough reason for you to just move on, to just let go of things, and you don't have to wait for that particular explanation of their actions. Number 2 is something that I have learned a little but मैं अभी भी सीख रही हूँ उसको, and that is start saying no. I have been a huge people pleaser in my life. मैं इंसान का सेंटेंस खत्म होने से पहले सोच रही थी कि हाँ I will do it, अरे no problem, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, and उसके बाद मेरे को लगता था कि मैंने हाँ क्यों बोला. And if that is you, well trust me, we've all been there. But genuinely, when you finally learn to say no and to respect your boundaries, you will definitely see a very big change in yourself and your lifestyle and your mindset. Number 3 is that discipline beats motivation. Discipline is something जो हर दिन चलेगा, but motivation is something जो random times पे आता है. Number 4 is be kind. You don't know what somebody else is going through. हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ battles होते हैं that they are fighting on a everyday basis. It can be anything. It can be a toxic relationship. It can be toxic friendship. It can be their parents. It can be studying. It can be anything. And you might not know about it. So be kind to anyone because you don't know what they are going through mentally and personally. Number 5 is give compliments. अगर इस पूरी लिस्ट में कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे अंदर सबसे ज़्यादा आई है, that is definitely this कि I never lose a chance to compliment someone. But अगर तुम दूसरे लोगों को compliment करोगे ना, तो just gain a positive mindset about yourself and about others, and that is way better than spreading negativity. Number 6 is life goes on. चाहे आपके sad moments हो, चाहे happy moments हो, life will go on. Life does not stop for anyone, even if they are going through a rough patch or if they are going through the happiest moment of their life. इससे मुझे एक quote याद आई जो मैंने reels में पढ़ी थी, and that was कि you will be 27 anyway, so why not be 27 and a doctor? And just not a doctor, you can be anything. That is what exactly I'm trying to say. Life will go on, so why not just do something along the way? 7 is stop thinking and start doing. मैं बहुत ज़्यादा सोचती रहती हूँ कि मेरे को ये करना है, मैं ये करूँगी, मैं ये वीडियो डालूंगी, मैं ये करूँगी, वो करूँगी, एंड मैं फिर कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं उन चीज़ों को इतना ज़्यादा ओवर प्लान कर लेती हूँ. लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू बी एन ओवर थिंकर, वाई नॉट ओवर थिंक पॉजिटिवली एंड ऑप्टिमिस्टिकली, and that is one thing that I am going to implement in my life for sure. Number 8 is do not stop doing things that make you happy even if other people might not like it. For me it was liking K-pop and listening to K-pop. I was like an early K-pop stan 2020-21 में. मेरे बहुत सारे ऐसे friends थे जो मेरे को mock करते थे because I used to listen to K-pop. I did not care and I'm still listening to K-pop because that thing makes me happy. Simple. Number 9 is try new things because you only live once. I am in that phase of my life where I want to learn so many things. Just be curious and try to learn as many things as you can. Number 10 is do not be afraid or embarrassed to ask for help, because if you will not clear your doubts, if you will not ask for help, then you will never learn and that will just stop your growth. Also I feel like अगर आप किसी से help मांग रहे हो ना, तो उस इंसान को भी अच्छा लगेगा because उनको थोड़ा सा useful feel होगा and उनको लगेगा कि हाँ this person trusts me enough to ask me for help. Number 11, and I stand by this, you only need a few good friends. Trust me, बहुत बड़ा friend group manage करना is so hectic, and you guys know the saying, quality is greater than quantity. Number 12 is that your priority should be you and your life, your future, your education, your career. It should not be your ex-best friend that broke your heart, or it should not be a boy that you randomly met. Number 13 is stop underestimating yourself. This is something जो मैंने recently अपनी life में implement करना शुरू करा है. Think about one thing जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए अच्छी होगी, maybe तुम्हारे future के लिए अच्छी होगी, या तुम्हारा बस मन है करने का, but तुम उसे सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरे से हो ही नहीं पाएगा. हाउ डू यू नो कि तुमसे नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो बहुत लोगों के लिए मुश्किल है, राइट? बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो चीज़ लोगों के लिए मुश्किल है, बट हो सकता है तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा हो कि तुम कर जाओ. तो तुम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते हो विदाउट एक्चुअली ट्राइंग दैट थिंग आउट. नंबर 14 इज कट ऑफ पीपल लाइक प्राइस टैग्स, एंड यस दैट इज अ कॉमन ग्रे रेफरेंस. इस चीज़ में मैं बोल सकती हूँ मे बी आई हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ कटिंग पीपल ऑफ.
बट जेनुअनली कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी तुम्हें चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, हरकतें पसंद नहीं आ रही है, फिर वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो तुम उससे हमेशा कंटिन्यूसली आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हो, ट्रस्ट मी दे आर नॉट वर्थ योर एनर्जी. नंबर 15 इज स्टॉप comparing yourself with people on social media because they only show you a small part of their life and you don't know what they are going through. और हर इंसान की सिचुएशन मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली हर चीज से अलग होती है. यू शुड नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन, और स्पेशली सोशल मीडिया पे तो यू शुड नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन एल्स. एंड फॉलोइंग दैट, नंबर 16 इज बी ग्रेटफुल वॉट यू हैव. वी ऑफन गेट बॉदर्ड बाय थिंग्स दैट अदर पीपल हैव बट वी रेयरली फील ग्रेटफुल for the things that we have. So just take a moment and be grateful for whatever you guys have, क्योंकि तुम अपनी लाइफ उन चीज़ों के बिना इमेजिन करो and that will genuinely teach you the value of those things that you already have. And at last, the most important thing that I've learned, number 17, and that is that I am just 17. Even if you are 80, you will not know everything. There will still be room for improvement. So there is no age where you will stop learning. So yeah, this was it for today's video. I hope you guys liked the video. I hope you guys learned something along the way. अगर आपका कोई भी ओपिनियन मेरे से डिफरेंट है, प्लीज लेट मी नो देम इन द कमेंट्स रिस्पेक्टफुली एंड विल टॉक देयर. डोंट फॉरगेट टू लाइक दैट वीडियो. आई एम वॉचिंग एंड आई एम वेटिंग. Like it and subscribe, and I'll see you in the next video. Bye bye.